Students, welcome to the first lesson of Fundamentals of Chemistry. In this lesson, we'll be looking at SLO 1.1.1, which is Define Chemistry and its various branches. जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो क्या होती है? It is chemicals and science lab and apparatus, but chemistry is also that is also chemistry, but chemistry में इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं that we'll be looking at once we'll be dealing with the course of class 9 and class 10. We'll be looking at different aspects of chemistry and different phenomena that are dealt in chemistry. Let's look at the definition. The definition says, when you're dealing with the composition, structure, properties and reactions of matter, then it is chemistry. क्या मतलब है इसका? Matter. What is matter? Matter is basically anything that occupies space and has mass. आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, whether it's a table or your clothes or your body itself or air, these are all matter because they occupy space and they have some mass. Matter की composition, structure, properties और reactions जब हम पढ़ते हैं, so हम कौन सी ब्रांच को डील कर रहे होते हैं? We are dealing with chemistry. There are सब branches in chemistry. Chemistry की ये branches आपने क्लास 9 के सिलेबस में पढ़नी है. The first one is physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, and analytical chemistry. So let's look at the first branch, which is the physical chemistry. What comes to your mind when you look at the word physical? Physical means physical properties. Physical chemistry deals with the physical properties. It is related with physics and laws. When you deal with physics, you deal with laws. So this branch of chemistry deals with the relationship between composition and physical properties of matter. Physical properties में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? Physical property में हमारे पास आती है density, temperature, वॉल्यूम, मास. तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं और हम इनके ऊपर लॉज अप्लाई करते हैं, हम फिज़िकल लॉज जब इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, देयर आर वेरी लॉज विच डील विद द डेंसिटी, देयर आर मैनी लॉज विच डील विद द मास. सो जब हम ये सारी लॉज केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं सब्सटेंसेस के ऊपर और कंपाउंड्स को डील करते हैं on the basis of these properties, on the basis of these physical properties, then we are dealing with physical chemistry. Organic chemistry. The second branch is organic chemistry, which deals with the compounds of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen के compounds को जो branch deal करती है, that is called organic chemistry. Okay? Carbon and hydrogen compounds are called hydrocarbons. What are hydrocarbons? Those compounds that are basically made up of carbon and hydrogen. इनका जो बेसिक स्केलेटन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है, ठीक है? एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स. डेरिवेटिव मीन्स द कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बेसिक हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनसे जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स. सो व्हेनेवर यू डील विद हाइड्रोकार्बन्स, that means the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives, you are dealing with organic chemistry. What is the significance of this branch? And we look at the significance. The first one is petroleum. जब हम ज़मीन के अंदर से अर्थ क्रस्ट में से पेट्रोल निकालते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, these are all organic in nature. These are all organic compounds. Diesel, petrol, gas, wax, all these things are petroleum, or called petroleum. So petroleum is the biggest significance of organic chemistry. Second one is plastics. Plastics are made with the help of hydrocarbons. So this is another important aspect of organic chemistry. Rubber and pharmaceutical medicines. रबर हम सब इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हम सब इस्तेमाल करते हैं. फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स जो भी बनती हैं, मेडिसिन्स जो बनती हैं इंडस्ट्री के अंदर, दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑल दोज केमिस्ट who make those medicines, they actually know organic chemistry.
or they have to study organic chemistry in order to make the medicines. The third branch is called inorganic chemistry. Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except of carbon and hydrogen. So हाइड्रोकार्बन्स को हम डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो कंपाउंड्स बचे, जो एलिमेंट्स बचे, उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है. इस ब्रांच की सिग्निफिकेंस क्या है? We make dyes, we make paints, we make leather, we make soaps with the help of inorganic chemistry as well as salts. Biochemistry. The branch of chemistry that we study in which we study the structure, composition, chemical reaction in the substances found in a living organism. Boys, we all know that we are living organisms. Animals are living organisms and there are millions of living organisms around us. उनकी बॉडी जिन केमिकल से और जिन सब्सटेंसेस से बनी है, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उन केमिकल्स की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर डीलिंग विद योर ब्लड. योर ब्लड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, carbohydrates and lipids. So all these compounds are studied in the branch of chemistry which is called biochemistry. What is the significance of this branch? As you know, biochemistry is dealing with the body itself, with the living body. So this is very significant in medical labs. If you want to study the composition of blood or any compound found in the blood, for example, you are studying an abnormal blood, or you're trying to find out which compound is present in the blood, you will be dealing with biochemistry. Proteins, carbohydrates and lipids, these are the compounds that make up your body. When you study them, that is biochemistry. Medicines, of course, and disease diagnosis. What do you mean by disease diagnosis? When you have a certain disease, that disease may be because of some chemical change in the body. When that chemical change is studied, it is dealing with biochemistry. Industrial chemistry. The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale. Commercial scale means on a market scale, on a big scale. When you're making compounds in large amount, like in millions or trillion tons of products you're producing every day, that is industrial chemistry. That is the help of industrial chemistry. What is the significance of this branch? This branch makes paper, soaps, fertilizers, paints, and many other compounds like detergents that you use in your houses every day. Nuclear chemistry. Branch of chemistry that deals with radioactivity, nuclear processes and properties. Nuclear means nucleus of the atom. Atom के center में एक part होता है जिसको हम nucleus कहते हैं. That nucleus is very important because if the nucleus is unstable, अगर वो unstable होगा, उसमें बहुत ज़्यादा protons और neutrons होंगे, so after a while it will disintegrate. वो nucleus split हो जाएगा. और जब वो nucleus split होगा तो उसमें से ख़ास तरह की रेज निकलती हैं जिनको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. This radioactivity is useful as well as it is disadvantageous. What is the significance of this branch? This branch deals with radiotherapy. What do you mean by radiotherapy? Radiotherapy is used on cancer patients to treat cancer. Radioisotopes. When you want to find out a tumor in the body, you will give them a pill that will has radioisotopes. Once the patient eats that radioisotope, the pill goes into the body and each cell of the body, and then you can trace that with the help of body scanning. You can do food sterilization by gamma rays. जो भी फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, जब वो अपनी फूड प्रोडक्ट्स कोई भी बनाती हैं, so that food is sterilized. That means it is the bacteria or any microorganisms are killed with the help of gamma rays. So gamma rays are again because of radioactivity. Environmental chemistry. The branch of chemistry that deals with the components of environment. जब भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, all the activities, all the human activities, they are affecting our environment. So whatever
thing is affecting our environment and the environmental changes, they all are dealt in the branch of chemistry called environmental chemistry. Significance: this branch studies pollution, it studies hygiene and the ways we can adopt hygienic environment or we can adopt hygiene. Sewage means the gutter line. Ozone depletion, you all know, because of pollution our ozone is depleting, it is destroying day by day, and the branch that is dealing with all these things is environmental chemistry. Analytical chemistry, the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components. जब भी आप किसी कंपाउंड के किसी सैम्पल को एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वो सैम्पल किन चीज़ों से मिलके बना है या उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो आप कौन सी ब्रांच डील कर रहे होते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से आप कंपाउंड्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और उनको एनालाइज भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव डील्स विद क्वालिटी, जब भी आप किसी कंपाउंड की क्वालिटी को स्टडी करते हैं दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो उसमें क्या किया जाता है? फूड कंटेमिनेशन, फॉर एग्जांपल योर फूड इज़ कंटेमिनेटेड, इट हैज़ स्पॉइल्ड and you want to find out the cause of spoilage, then you are dealing with qualitative analysis. Drug analysis, for example you want to find out somewhere if there is a drug present or not, if there are drug traces present or not, you are going to perform certain tests जिससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ड्रग है या नहीं है। जैसे एयरपोर्ट में जब कोई भी पैसेंजर आता है, they analyze them and they perform certain test जिससे उनको पता चलता है कि उसके पास ड्रग्स हैं या नहीं है। So these two are the qualitative analysis. Preliminary tests वही होते हैं जैसे कि आप किसी कंपाउंड के कलर को देख के, आप किसी कंपाउंड के अपीयरेंस को देख के या फिर उसकी स्टेट को देख के बता दें कि वो कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, सो ऑल दीज आर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस डील्स विद क्वालिटी, द थिंग्स दैट यू सी। द सेकेंड वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब आप किसी कंपाउंड की कंसनट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी, it deals with quantity such as titration that you will learn in class 10. And volumetric analysis means to find out the concentration or the amount of a substance in any other substance. I hope you understood all these branches of chemistry well. We'll be meeting in the next lecture, inshallah. Thank you so much. If you understood this video and if you understood every concept of this video, do tell me. If you did not understand anything, you can ask me in the comment section. If you have watched this video, please comment watched in the comment section. Thank you.